कॉर्पोरेट आर में अब हम बात करेंगे पीएनबी गिल्ड्स की। 1996 में शुरू हुई कंपनी रिजर्व बैंक से प्राइमरी डीलरशिप लाइसेंस पाने वाली पहली संस्थाओं में से एक है। ये मुख्य तौर पर सरकार के उधारी कार्यक्रम को सहयोग करती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन में ट्रेडिंग का काम करती है। सितंबर तिमाही के नतीजे पर अगर नज़र डालें तो सालाना आधार पर कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है। वही ब्याज आय भी करीब 40% घटी है, 80 करोड़ पर आई है। सितंबर तिमाही के नतीजों पर क्यों आया दबाव, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस का क्या है अपडेट, आगे किस तरीके का आउटलुक है, चलिए इन सभी पर बातचीत करने के लिए स्वागत करते हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ विकास गोयल जी का। मिस्टर गोयल, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें समय दिया। पहले तो सर नंबर्स मैं देख रही हूँ और नंबर्स जो कमज़ोर आए हैं उसकी खास वजह मैं जानना चाहूँगी। लास्ट 2 क्वार्टर्स से हम देख रहे हैं कंपनी लॉसेस पोस्ट कर रही है, क्या वजह है सर और हम कब देखेंगे ये इम्प्रूवमेंट आते हुए आगे? स्वाति, धन्यवाद आपका, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। ये मैंने पहले भी बोला था कि लास्ट 2 क्वार्टर्स जो थे बिकॉज ऑफ रिजर्व बैंक की पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये फ्रंट लोडेड रेट हाइक्स, आपको भी पता है इंटरेस्ट रेट्स वेंट अप ऑलमोस्ट 2 percentage points, 200 basis points. Obviously that has a direct impact on our business and that is what resulted in the performance which you see for last 2 quarters. ठीक बात है, जो परफॉर्मेंस खराब रही उसके मुख्य कारण इन्फ्लेशन को रोकने की जो आरबीआई की एक एफर्ट था उसकी वजह से असर पड़ा। बट सर आगे कैसा दिख रहा है, आगे हम किस तरीके की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेंगे आपसे? आगे खबर अच्छी लग रही है। इन माय व्यू रिजर्व बैंक का अब पिवट होना चाहिए टू गो अवे फ्रॉम इन्फ्लेशन एंड फोकस ऑन ग्रोथ, व्हिच मींस दैट इंटरेस्ट रेट जो पेस था इंक्रीज का एटलीस्ट वो रिड्यूस हो जाएगा। जो 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ रहे थे, इन ऑल प्रोबेबिलिटी परसों शायद 50 से कम हो, in all probability 25 से 35 के बीच में होंगे, which will have a positive impact on our business. The other factors जो हैं वो support करते हैं हमारे business को. If you look at it, growth numbers are getting dialed down. जो 7.5% से start करा था growth, GDP growth for this year, now it is down to 7, and some forecasters are talking about as low as 6.5%. Inflation also is coming down. October inflation was 6.77. It's expected to average about 6.4 इस क्वार्टर के लिए, फिर आगे 5.8 and Q1 में 5%. And if that is indeed true, Reserve Bank will at least reduce the pace, if not stop entirely. The front loading, whatever front loading they have done in terms of hiking rates, उसका impact अब it has started percolating through the economy. And that is what you see in manufacturing number. जो growth number अभी आया था, GDP growth number, you saw that there was a slowdown in manufacturing. So obviously there has the impact of monetary policy is felt with a lag. Okay. तो अब वो impact करना शुरू हो गया है। Okay. तो आगे Reserve Bank will either reduce or maybe wait and pause and watch for the outcome. Sure. And in trajectory पे आ गया 5% आ गया, then maybe there is no need for more hikes. ये कहने के बाद ये कहना चाहूंगा कि मार्केट का कंसेंसस अभी भी है जो आज 5.9 है रिपो रेट। द कंसेंसस ऑफ द मार्केट इज एनीवेयर बिटवीन 6.25 and 6.5। वहां जाके रिजर्व बैंक रुकेगा। ओके, श्योर। तो थोड़ा सा यहाँ से मार्जिनल इंक्रीज जरूर देख भी सकते हैं, बट आप कह रहे हैं कि आगे इंडिकेशंस है कि ये कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो जाएगा और वेट एंड वॉच या पॉज की तरफ हम बढ़ेंगे। ग्रोथ को अब फोकस देने की बात है ऑब्वियसली, क्योंकि इन्फ्लेशन इन मेनी वेज हमें लग रहा है कि थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है। ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग आपने कहा थोड़ी अभी भी दिक्कत है, तो आई थिंक वी आर रीचिंग दैट स्टेबिलिटी, स्टिल वी आर वर्क इन प्रोग्रेस इन दैट सेंस। तो जो इम्पैक्ट है राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स का ऑन द बिजनेस दैट you've seen, कितना असर अभी तक पड़ा है, क्वान्टिफाई थोड़ा कर पाएंगे हमारे लिए, और आगे ये साल FY23 कैसा आप देख रहे हैं, समराइज कर सकते हैं, हाउ इज इट लुकिंग टू क्लोज? स्वाति, आपको पता है हमारा बिजनेस इज ट्रेडिंग बिजनेस, सो डिफिकल्ट टू मेक अ फॉरवर्ड प्रेडिक्शन, बट हैविंग सेड दैट, like I said, अभी rates are most of the rate hikes is behind us now and very little is left if at all.
So maybe at best about 50 to 60 basis points more. If that is the case, then obviously bond prices will react positively. Already, for instance, जो 10 साल का government security है, which had peaked at a yield of 760, is presently at about 722. So almost 40 basis points down. आपको पता ही है, markets don't wait for Reserve Bank to act. They will anticipate what Reserve Bank is going to do. So already yields have started coming down, at least in professional markets. And so I do see quarter 3 and quarter 4 for PNB Gilts. Hopefully, if everything goes as per the forecast of Reserve Bank, to be better than quarter 1 and quarter 2. ओके डेफिनेटली. तो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स बेहतर होंगे क्वार्टर 1 और 2 से, क्योंकि आगे इंडिकेशंस भी उसी तरह की लग रही है. आपने उसको अच्छे से समझाया सर. बट ऑफ लेट हम देख रहे हैं लिक्विडिटी इंडियन बैंकिंग सिस्टम इंडस्ट्री की थोड़ी कम होती जा रही है. कैसे देखते हैं? आरबीआई ने अब तक तो बहुत अच्छा काम किया था टू मेंटेन लिक्विडिटी इन द सिस्टम, बट आगे व्हाट डू यू थिंक एंड हाउ शुड आरबीआई मेंटेन दैट? आपको लगता है ये वाकई एक गैप हो रहा है या दिक्कत आ सकती है यहाँ पर? मेरे हिसाब से नहीं, because there is lot of government spending which has to come through. So government balances are very high. So once that money comes back into the system, banking system, liquidity will improve. Second thing is that right now Reserve Bank will be busy building its reserves. So it will be, so which means basically dollar खरीदेगा and rupees, it will pay with rupees. So that additional liquidity will come into the system. So I do not see a problem on the liquidity front in the next 2-3 months. I think there will be, and it is a stated objective Reserve Banker, that they will make sure there is adequate liquidity available to support the economy, which I think they will not deviate from. Okay, sure. So आपका व्यू है कि लिक्विडिटी है और ऐसी प्रॉब्लम नहीं आप एंटिसिपेट कर रहे हैं. सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 21 अक्टूबर को देखा कि परमिट किया है द मैनेजमेंट टू अप्लाई फॉर आरबीआई परमिशन फॉर अंडरटेकिंग द फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस एंड बाकी और भी चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड होगी उसके लिए. क्या इसका मायने है सर? थोड़ा सा हमें बताइए किस पर्टिकुलर बिजनेस पर आप फोकस कर रहे हैं, आगे क्या वेंचर करेंगे? कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दिस इन अ बिट डिटेल सर? Yeah, so essentially foreign exchange business now, Reserve Bank allows primary dealers a license which is equivalent of a bank's license to deal in foreign exchange market. For us, it's an opportunity to deal in an asset class which is not correlated to interest rates directly. So additional income stream can happen both from trading as well as sales to clients. So this is what we are looking at, and we are in the process of applying for a license from Reserve Bank. And अभी 6 महीने to 1 साल लगेगा to start the business, but we are working on starting this business. Yes. Okay, 6 महीने से 1 साल लगेगा, but you are working on starting this business. यहाँ पर opportunity देखते हैं. तो सर, what will it mean in terms of financials for you? कुछ इस पर आपने assessment किया है? ये जो आपके books में क्या इसका एडवांटेज होगा if the investors would like to know that? तो आपको मैंने एडवांटेज बताया. From financial viewpoint, we have adequate amount of capital to support this business, so we don't require more capital or anything else like that. Obviously, we have to set up the infrastructure, hire the right kind of people, etc. Rest of that will happen. But from viewpoint of financials, we don't require extra capital. So we have adequate capital to support the business. The advantage जो मैंने पहले भी बोला, ये business is non-correlated to interest rate business, so you can then have a more diversified revenue stream. But sir, एक सवाल आपसे जानना है. जो बज़ था इंडियन बॉन्ड मार्केट में भी इंक्लूडेड टू जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट डेट इंडेक्स, वहाँ पर कुछ एक्चुअली हुआ नहीं. क्यों आपको मतलब हाउ डू यू रीड दैट एंड क्यों एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है सर अभी तक इंडियन बॉन्ड्स की ग्लोबल मार्केट्स में? कहाँ लगता है ये एक मिस है, एंड व्हेन डू यू थिंक दिस विल रियली चेंज? So right now, from a market perspective, it's no longer a factor to consider. It's in the background. बहुत बातें हुई थी, we came very close, etc. But बात नहीं बनी. And there are 2 reasons for it, from what I can understand.
One is tax treatment. So obviously we want tax treatment on these bonds to be consistent, whether they are traded offshore or onshore. So your offshore में tax treatment obviously could have been very different. We wanted the same tax treatment, तो वो बात नहीं बन पाई एक तो. और दूसरी बात ही obviously clearing and settlement of bonds, where should it happen? Offshore होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, confusion. But basically, I think the conversation I think stopped on tax treatment of holders if transaction happens offshore as compared to transaction happening onshore. So as of now, this is not a factor. Today the market is not considering it or keeping it. Sure, fair enough. और आपने समझाया कि क्यों शायद वहाँ पर दिक्कत आई थी, टैक्स ट्रीटमेंट का एक कंसर्न था. एक और सवाल सर आपसे जानना चाहूँगी, रिसेंटली जो सेबी ने चेंजेस किए हैं टू इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड्स एंड डेट फंड्स, यहाँ पर सर कहा गया कि सिंगल इशूअर AAA रेटेड डेट सिक्योरिटीज़ में एसेट वैल्यू का 10% जो सीमा निर्धारित की गई है, AA रेटिंग वालों के लिए ये सीमा 8%, A रेटिंग के लिए 6%. क्या इससे कुछ आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट आपको दिखता है सर? So we are also an arranger in corporate bond market. We are amongst the top 10 arrangers in India in corporate bond market, but it is a small part of our business. It's about 10-15% of our business. जैसे आपने कहा था इंट्रोडक्शन में, हमारा प्राइमरी बिजनेस इज डीलिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज and which is basically central government securities and state development loans. So overall the impact is very limited. While mutual funds are big players in non-SLR or corporate bonds, so obviously they will have to rejig their portfolios given the new requirements. But from our perspective, we anyways deal in AA plus and AAA only. So हमारे business पे impact will be very limited of these changes by SEBI. Okay, fair enough. तो impact यहाँ पर limited ही होगा जैसा आप बता रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए नंबर्स कैसे रहे, आगे किस तरीके का आउटलुक है, क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है आपके आगे के आउटलुक पर और बिजनेस को लेकर. तो ये थे PNB गिल्ट्स के मैनेजमेंट हमसे बातचीत करते हुए.